Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I am audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. We'll just wait for a couple of minutes because I see that people are joining in, and we should be good to go in another 2 minutes or so. Great, Rakesh ji, good afternoon. Chandrasekhar ji, good afternoon. Suresh ji, Harish ji, good afternoon to you as well. Let's just wait for a few seconds and then we should start with the session. आपकी आवाज साफ है? ओके, परफेक्ट, ग्रेट. सो शुरू करते हैं आज का मिड मार्केट सेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट, अगेन आई वांटेड टू let you all know about the impersonation scams that is going around, because we've come across some cases where people have been falling for these scams. So it's our duty to ensure that you don't fall for any of such things. So there are a lot of fake individuals, WhatsApp groups, and websites that are misusing SBI Securities brand name. So don't trust any of these sources. Always look for communications from verified handles. So you will see a blue tick if it's a WhatsApp message. So look for communications from verified sources only. And stay vigilant and trust communications only from SBI Securities. Any other communication that you get from anyone else, please don't trust them. And if you come across any of such WhatsApp groups or fake individuals who are promising any, stock tip service or in the nature of guaranteed returns or fixed returns, don't, trust them and don't give away any of your personal data. And if you come across any such thing, please contact our helpline number at 68545555. So stay aware and stay careful. Okay. Now let us start off with our mid market session today. So let's start off with an update on the global markets first. So if you look at the US markets yesterday, so Dow Jones, again, it had one more day of profit booking. It closed around 1.07% lower. S&P 500 closed around 0.83% lower, while Nasdaq closed around 1.2% lower. So again, US markets, have had another day of profit booking. If you look at Dow Futures is down 0.06%. So we can expect a flat to slightly negative start for the US markets today. अगर हम यूरोप मार्केट्स की बात करें, सो जर्मनी इज डाउन 1.74%, लंदन 1.27% नीचे है और फ्रांस भी 1.86% नीचे है. तो हम देख रहे हैं कि इवन यूरोपियन मार्केट्स में काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग कल देखी गई है. सारे जो आपके यूरोपियन इंडेक्स है ऑलमोस्ट 1% के नीचे कल क्लोज हुए. अगर हम यूरो स्टॉक 50 की बात करें, सो दैट इज डाउन अराउंड 0.18%. एशियन मार्केट्स की बात करें, सो बारिंग आर मार्केट्स, हमारे मार्केट्स छोड़ के अगर हम निकाय देखें, निकाय इज डाउन 0.34%, हैंसेंग भी 0.3% नीचे है. कॉस्पी कल ऑलमोस्ट लगातार 3.5% नीचे था, आज फिर 0.6% नीचे है. Only good thing is Chinese market is mildly positive. Shanghai अगर हम देखेंगे 0.21% ऊपर है. और our markets are also doing well today. Relatively थोड़ा चॉपीनेस देखा गया है सुबह के ट्रेड से. पहले हम नीचे गए, फिर वहां से एक रिकवरी आई, फिर से हम नीचे आ गए. So intraday movement काफी चॉपी है, but nevertheless Nifty has crossed 26,000 mark, जो कि एक strong रेजिस्टेंस जोन बनते आ रहा था पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से. सो हम अभी 26,026 पर है. वी आर अप अराउंड 0.45%. सो थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहा है ऊपर की साइड में. और सेंसेक्स इज एट
84,982, it is also up around 0.3%. So our market is relatively काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे compared to the US and the European markets. If we look at the macro indicators, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, so dollar index again has been consolidating again in the range. So nothing much has changed in the dollar index. ऊपर की तरफ 100.3, 100.5 एक strong resistance zone होगा, और नीचे की तरफ 98.6, 98.5 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा यूएस डॉलर इंडेक्स. So if it goes below 98.5 on the downside, emerging markets जैसे हमारे मार्केट्स है उसके लिए काफी पॉजिटिव साइन हो सकता है. बट एनी मूव अबाउ 100, चांसेस आर दैट थोड़ा सा प्रेशर फिर से हमारे मार्केट्स में आ सकता है. If you look at the US गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10-year yields, वो भी relatively flat ही है. यहाँ पे दो बार 4.15, 4.16% के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10-year yields. तो अगर ये 4.2, 4.3% के ऊपर जाता है तो हो सकता है थोड़ा फ्लोज फिर से यूएस ट्रेजरीज में जाए और हमारे मार्केट से थोड़ा सा प्रेशर और बन सकता है. बट अगर ये यील्ड्स नीचे जाते हैं, लेट्स से टुवर्ड्स 4%, 3.9%, तो chances are that we can expect some flows again coming back to emerging markets. If you look at India VIX, तो कल इंडिया विक्स पे थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आई थी, ऑलमोस्ट 2.6% का. बट रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो अभी भी इंडिया विक्स फ्लैट ही है. ऐसे कुछ संकेत नहीं दे रहा है कि मार्केट में कुछ पैनिक है या फियर है. शायद पैनिक थोड़ा आ सकता है अगर इंडिया विक्स 13.5 के ऊपर अगर चले जाए तो थोड़ा सा पैनिक लाइक सिचुएशन, पैनिक नहीं बट थोड़ा सा एक डर आ सकता है मार्केट में इफ विक्स गोज अप, बिकॉज जब विक्स ऊपर जाता है तो बुल्स को काफी डिस्कम्फर्ट देता है विक्स. बट एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स बिलो दी 13 मार्क, देयर इज नो मेजर साइंस टू वरी. अगर हम डॉलर बाय रूपी की बात करें, अब डॉलर इज एट 88.48, अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है काफी. तो अगर ये डॉलर, वी वांट रूपी टू अप्रिशिएट, बट अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है रूपी के अगेंस्ट तो वो FIIs को इट कीप्स द FIIs अवे फ्रॉम आवर मार्केट. सो FIIs को फिर से अगर इंडियन मार्केट्स में आना है, वन ऑफ द की ट्रिगर्स वुड बी डॉलर वीकनिंग. सो अगर हम लेट्स से टुवर्ड्स 87, 86 लेवल्स तक जाते हैं फिर से, then हो सकता है कि FIIs can come back to our markets. But any move above 89, अगर हम 88.5, 89 पार कर जाते हैं तो फिर अगेन थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए रह सकता है हमारे मार्केट्स में. Now if you look at crude oil, so crude oil prices में भी काफी कुछ चेंज नहीं हुआ है. So crude oil prices, crude oil is at $64 a barrel. हाल ही में ऐसा आया था कि जब पिछले महीने आपको याद है यूएस ने बोला था इंडिया को कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करना, बिकॉज अगर आप रशिया से ऑयल परचेज करते हैं तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएंगे. तो अभी का डेटा ऐसा आया कि रशिया से अगर हम फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर देखें तो थोड़ा सा हमने कम कर दिया इम्पोर्ट्स. सो रफली अराउंड 1.88 मिलियन बैरल्स पर डे हम इम्पोर्ट होता था इंडिया में. अभी वो इट हैज कम डाउन टू 6,72,000 बैरल्स पर डे. सो हमने रशिया से थोड़ा सा ऑयल इम्पोर्ट्स कम कर दिए है. बट ये आगे जाके देखना होगा कि ये एक सिर्फ ये 1 मंथ, ये जो 15 डेज था उसमें कमी हुआ था या ये सिर्फ एक वन ऑफ केस है और आगे जाके फिर से ये बढ़ने वाला है कि नहीं. बट नेवरदलेस अगर हम क्रूड ऑयल देखें, सो एज लॉन्ग एज it stays below the 66, $67 barrel mark, there is no signs of worry for the markets. On the downside, ये जो 59 to $60 a barrel है वो एक strong support होगा क्रूड ऑयल के लिए. अगर हम सिल्वर की बात करें, सो सिल्वर 3 दिन के प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक छोटा सा एक बाउंस नजर आया यहाँ पे 20-day ए में से. अभी सिल्वर अराउंड $51 एन आउंस है. सो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है सिल्वर का. द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल अप. तो जब तक हम नीचे $45 एन आउंस के नीचे नहीं जाते तब तक जो अप ट्रेंड है सिल्वर में वो इंटैक्ट रह सकता है. ऑन दी अदर साइड इफ यू लुक एट गोल्ड, सो गोल्ड में भी थोड़ा सा एक बाइंग नजर आई है फ्रॉम दी लोअर लेवल्स. So gold has again crossed the $4,000 an ounce mark. It is at near about $4,100 an ounce.
सो गोल्ड में भी एज लॉन्ग एज नीचे की तरफ 3890 3900 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये जोन इंटैक्ट रहेगा तब तक आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है फॉर जो ओवरऑल अपट्रेंड में है जो गोल्ड, दैट इज गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट। इफ वी लुक एट द एफआईआई पोजिशनिंग, कल हमने देखा कैश मार्केट में फिर से एफआईआईज वर नेट सेलर्स। 728 करोड़ का सेलिंग कल देखा गया था कैश मार्केट में। और हम देखते आ रहे कि बीच में 7 नवंबर को एक 4580 करोड़ का एक बाइंग देखा गया था। फिर 17 नवंबर को 42 करोड़ का बाइंग यहाँ पे दिखा था। बट नेवरदलेस अगर हम देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, ये 10,000 करोड़ का अगर आपको याद है पिछले एक्सपायरी के दिन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिगर आया था। बट उसके बाद रिलेटिवली अगर हम नवंबर मंथ देखें तो देवर हैव बीन नेट सेलर्स बारिंग कपल ऑफ डेज ऑफ बाइंग। एफआईआईज लगातार कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इफ यू लुक एट द नेट इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सो माइनस 1,69,000 से माइनस 1,68,000 हो गया है। लॉन्ग शॉर्ट रेशो में थोड़ा सा माइल्ड इंप्रूवमेंट है फ्रॉम ऑलमोस्ट 12%, हम 12.16% पर आ गए। इसका मतलब अभी भी ये है कि सिर्फ एफआईआईज के पास 12% लॉन्ग पोजीशंस है और अभी भी 88% शॉर्ट पोजीशंस है। सो एफआईआई स्टिल होल्ड मोर शॉर्ट पोजीशंस एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशंस इन इंडेक्स फ्यूचर्स। सो एफआईआईज हम लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने से देखते आ रहे कि ऐसे लगता है कि एफआईआईज थोड़ा सा बाइंग करते हैं बट अगेन सेलिंग रेज्यूम हो जाता है। सो अभी भी एफआईआईज एक वेट एंड वॉच मोड पर ही है। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि डोमेस्टिक जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका जो पार्टिसिपेशन है इक्विटीज में वो काफी बढ़ गया है, तो मार्केट्स को काफी सपोर्ट दे रहा है। एल्स अगर रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ता और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, क्योंकि लगातार हर महीना एसआईपी के फ्लोज भी बढ़ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के पास एक इनफ power है to offset any negative impact that is created by the FIIs. सो अगर ये जारी रहेगा, अगर जब भी FIIs आते हैं तो शायद वो जो मोमेंटम जो लैकिंग है वो शायद फिर से आ सकता है हमारे मार्केट्स में। एंड डिस्पाइट एफआईआई सेलिंग अगर हम देखेंगे निफ्टी इज एट 26,030 नाउ और ऑल टाइम हाई 26,277 है। We are roughly only around 200-250 points away from the all time high. So ऐसा भी नहीं है कि हमारा मार्केट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एफआईआईस काफी नीचे है। बट हाँ, अगर एफआईआईस आ जाते हैं तो थोड़ा एक अलग बूस्ट मिल जाता है मार्केट्स को, तो लिक्विडिटी काफी हेल्प करती है एफआईआईस के वजह से। सो मे बी अगर डॉलर थोड़ा सा वीकन होता है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, आई थिंक मार्केट इज कीनली अवेटिंग दैट, वो एक मेजर न्यूज होगा हमारे मार्केट्स के लिए। बिकॉज अगर एक स्ट्रॉन्ग डील अगर बनता है इंडिया यूएस के बीच, आई थिंक फिर एफआईआईस की वापसी हो सकती है हमारी मार्केट्स में। नाउ इफ वी लुक एट निफ्टी की हम बात करें, सो निफ्टी पोस्ट द इनिशियल वीकनेस इट काइंड ऑफ हैज सर्ज्ड। अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक हेजिटेशन था 25,980 लेवल्स के आसपास, वहां से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था। बट देन अगेन हम फिर से अगर हम देखेंगे 25,920 25,930 से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आई है निफ्टी में, एंड वी आर वेल अबाउ द 26,000 मार्क। नाउ इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, पिछले 3 दिन से अगर हम देखते हैं कि लगातार ये जो 26,030 जोन है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। बिकॉज हमने 17 नवंबर को मंडे को भी देखा था, ये 26,024 का हाई था। कल हमने देखा था ये 2629 का हाई था, और आज अभी 26,031 है। सो ये वाला जो जोन है 26,000 26,050, ये जो 50 पॉइंट्स का जो जोन है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। ऐसे कैंडल देख के ऐसे लग रहा है कि आज शायद निफ्टी के लिए अच्छा दिन रह सकता है, और शायद हमें 26,050 के ऊपर ही क्लोज मिले, बिकॉज इंट्राडे सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। बट अगर हम 26,050 पार भी कर जाते हैं तो एक दूसरा रेजिस्टेंस है 24,100 के आसपास, बिकॉज हमने देखा था ये 23 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को ऑलमोस्ट 26,100 के आसपास निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। सो अगर हम 26,050 पार भी कर जाते हैं तो एक दूसरा एक मेजर रेजिस्टेंस है फिर से 24,100 पे। बट आई फील अगर निफ्टी डिसाइसिवली 26,100 को ब्रेकआउट कर देता है ऑन दी अपसाइड,
तब जाके शायद निफ्टी फिर से एक अटेम्प्ट करेगा टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाइज ऑफ 26,277। तो जब तक ये 26,000 26,100 में पूरा 100 पॉइंट्स का ही जोन पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, बट जब तक ये 26,000 26,050 26,100 ये जोन जब तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है, तब तक शायद एक चॉपीनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आज एक हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है, let's say if we get a close about 26,050 और कल हमें 26,100 के अगर हम ऊपर जाते हैं, देन हो सकता है हमें एक स्विफ्ट मोमेंटम मिले ऑन दी हायर साइड। एंड ऑन दी डाउन साइड अराउंड 25,800 25,900 that is likely to act as a strong support zone for Nifty. So any dips अगर हम देखेंगे, जब जब निफ्टी गिरता भी है तो नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आती है। कल भी नीचे गिरा था एंड देन वी रिकवर्ड, टुडे आल्सो वी रिकवर्ड फ्रॉम द लोज हियर। सो यू कैन सी एवरी डिप इज बीन बॉट इनटू। सो द ओवरऑल ट्रेंड अगेन इट्स बुलिश। अगर आप आरएसआई भी देखोगे थोड़ा सा 60 आके अगेन इट हैज स्टार्टेड टू पॉइंट अपवर्ड्स। MACD slope is currently flat, but if we get a strong breakout, then chances are that Nifty can move higher towards 26,300 levels. But for that, it needs to go past the 26,100 mark, जो कि काफी एक strong resistance zone है निफ्टी के लिए। Now, अगर हम सेंसेक्स की बात करें, so सेंसेक्स pretty much similar इनिशियल वीकनेस के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है इंट्राडे बेसिस पे। और अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो जैसे हम 26,050 जोन 26,050 जोन की बात कर रहे थे यहाँ पे निफ्टी में, तो वैसे ही सेंसेक्स के लिए कि ये इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है जो कि आपका 85,000 85,100। अभी राइट नाउ सेंसेक्स 85,020 पर है, बट पिछले 2 दिन हमने यहाँ पे देखा था 84,988, कल के सेशन में 85,042 और आज का हाई 85,079 है। अभी फिलहाल सेंसेक्स 85,21 पर है, बट सेंसेक्स के लिए भी 85,100 के ऊपर क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, because once Sensex crosses 85,100 on the upside, then it can move towards 85,300 followed by 85,500. It's just that ये जो 85,000 85,100 का जोन है, वो एक काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते आ रहा है सेंसेक्स के लिए। एंड ऑन दी डाउन साइड अगर आप देखोगे एवरी डिप इज बीन बॉट इनटू। जैसे निफ्टी में एक लोअर लेवल से रिकवरी देखी गई है, वैसे सेंसेक्स में भी वही देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक माइनर लोअर शैडोज है, यहाँ पे एक लंबा लोअर शैडो है। दैट मींस बायर्स आर इंटरेस्टेड एट लोअर लेवल्स। और पिछले 3 दिन सेंसेक्स में भी हमने यही देखा कि जब जब सेंसेक्स इंट्राडे में गिरा है, वहां से एक रिकवरी हमें नजर आई है। सो ऑन दी डाउन साइड अराउंड 84,400 84,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा सेंसेक्स के लिए। While on the upside, we needs a breakout above 85,100. I think once Sensex breaks above 85,100, वो swiftly 85,500 level की ऊपर तक जा सकता है. So not a market to be short. So don't be aggressively shorts in this market. The trend is bullish. The overall uptrend is intact. It's just that market is under a bit of consolidation phase now. And I think once the key resistance levels are taken out, chances are that the market can move up higher. Now, if we look at Bank Nifty, so Bank Nifty, has relatively outperformed. So Bank Nifty ने 59,000 मार्क फिर से क्रॉस कर लिया है यहाँ पे। कल के सेशन में हमने देखा था कि ये 59,000 के ऊपर गया था ऑलमोस्ट 59,100, बट वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखा गया था। तो आज के सेशन में भी ये जो 59,100 है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। बट बैंक निफ्टी का मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 59,001, कल के सेशन में 59,100 और अभी 59,055 का हाई है आज के सेशन में। बट अगर बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाईस पर ही है, अभी तक निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया है, but Bank Nifty has hit an all-time high. So if Bank Nifty closes above 59,100, then chances are that we can see 59,500 or even 56,000 can come very soon in Bank Nifty. और बैंक निफ्टी का और एक बात ये भी है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हम पिछले 4 हफ्ते से ये देखते आ रहे थे कि बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा था with around 58,500 58,600 acting as a strong resistance for Bank Nifty. बट जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट मिल गया है 17 नवंबर को,
थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, बट आई फील द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट. आई थिंक अबाउ 59,100 Bank Nifty can move higher towards 59,500 or even 56,000. With around 58,700, 58,800 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए. Now, if we talk about the heat map, so let us look at Nifty 50. So अगर हम Nifty 50 की बात करें, so आज again IT एक strong support दे रहा है markets को. Infi is up around 3%, HCL Tech is up around 4%, Wipro is up 2%. So today IT आप एक man of the match बोल सकते हो आज के session में. TCS is again up around 1.78%. So काफी strong support है IT से आज. If you look at private banks, again Kotak Bank, ICICI, Axis Bank are doing well. HDFC Bank एक major heavyweight है जो around 0.42% नीचे है. Reliance is also flat 0.07% और भारती एयरटेल भी फ्लैट है. सो रिलेटिवली अगर हम देखेंगे इन्फी और आईसीआईसीआई बैंक जो कि टॉप हेवीवेट है, वो ही एक मार्केट्स को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है. If you see even some pockets of auto is also strong. Tata Motors passenger vehicles again continues to fall. It's down around 2%. Mahindra 1.2% ऊपर है. Oil and gas space, Reliance and Coal India is relatively. Coal India is down, but ONGC is up around 0.85%. Pharma से भी आज एक strong support मिल रहा है markets को. कल के session में pharma relatively quiet था. Sun Pharma is up around 1.5%. Cipla is up around 0.8%. If you look at the FMCG space, Hindustan Unilever 1.6% ऊपर है. Nestle India 0.6% ऊपर है. Some pockets of health services are also doing well. If we see, I think Max Health, these are a couple of names. Apollo Hospital, these are a couple of names that are doing well here. Overall, if we see कौन से stocks नीचे है, Maruti is down around 1%, HDFC 0.5% नीचे है, Coal India 0.7% नीचे है, NTPC is down 0.84%, Tata Motors passenger vehicles is down 2%. So these are the stocks that are not doing well today. But अगर सेकेंड हाफ में रिलायंस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, ये तीन स्टॉक्स में अगर बाइंग आती है तो हो सकता है निफ्टी कैन मूव टुवर्ड्स 26,050 और इवन 26,100. वी डोंट नो बिकॉज सारे मेजर हेवीवेट्स का सपोर्ट है. Just that HDFC Bank, Reliance and Bharti Airtel is kind of quiet. So if any buying emerges in these three counters, then I think high chances are that Nifty can give a strong close today. Now, talking about the key sectors to watch and the key stocks that are in focus. So सबसे पहले मुझे बात करना है IT इंडेक्स के बारे में. IT इंडेक्स हम काफी टाइम से उम्मीद लगा के रखे कि हर टाइम नीचे के लेवल से एक बाउंस आता है तो हमें लगता है कि चलो अब तो ये सस्टेन होगा. और हमने काफी टाइम एक IT इंडेक्स को एनालाइज कर लिया. अगर हम देखेंगे 17 अप्रैल को यही जो 1.4 का जो लेवल है, दिस इज IT बाय निफ्टीज रेशियो चार्ट, वहां से एक बाउंस मिला था. बट सेकेंड टाइम वही लेवल से आया. हमें लगा था कि चलो अब IT यहाँ से रिवर्स होगा, बट यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला. फिर से वही लेवल पर आया. चलो अभी हमें लगा कि चलो अभी IT में एक बाइंग आ सकती है, बट फिर से वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया. फिर यहाँ पे अगर आपको याद है ये लेवल IT फिर एक अंडर परफॉर्म करने लग गया था. IT वेंट डाउन. फिर देन देयर वाज अनदर बाउट ऑफ बाइंग इन IT. तो हर टाइम IT गिरता है तो वहां से एक लोअर लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट आया था, फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आया था. देन IT वेंट क्वाइट फॉर सम टाइम. फिर हाल ही में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आया था. फिर से वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन फिर से आज एक बाउंस देखने को मिला है. सो वेरी डिफिकल्ट टू से ये फिर से वो बाउंस है जो आगे जाके फिर से फेल हो जाएगा या ये सस्टेन करेगा. बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ, सो आई फील आई कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस. So I feel IT needs 2-3 days of consistent buying होना चाहिए IT इंडेक्स में, तब जाके एक रिवर्सल की उम्मीद लगा सकते हैं. बट टू अर्ली टू से कि ये फिर से एक रिवर्सल है क्या. करंटली डेफिनेटली बाउंस हुआ है, बट क्या ये रिवर्सल है एट दिस पॉइंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. बिकॉज हर टाइम ऐसा ही होता है कि ये बाउंस मिलता है बट वो फेल कर जाता है सस्टेन करने. So we'll have to give 2-3 days to see whether this is actually a reversal or again another blip in the IT index. But having said that, there are a couple of names in the IT index that are doing well. एक है आपका persistent.
तो अगर हम परसिस्टेंट की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से एक टाइट रेंज में मूव हो रहा था अराउंड 6030 ऑन दी डाउन साइड एंड 6215 ऑन दी अपसाइड एंड टुडे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है हमें परसिस्टेंट में विद शार्प राइज इन दी वॉल्यूम्स एज वेल. आरएसआई भी ऊपर की तरफ है, एमएसीडी स्लोप इज आल्सो पॉइंटिंग अपवर्ड्स. तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो हो सकता है इवन परसिस्टेंट सिस्टम्स कैन हैव अ गुड ट्रेडिंग डेज अहेड. I think it can move towards 6,500, 6,600 with around a apart from that, even HCL Tech has seen a similar pattern. तो अगर 4-5 दिनों से even HCL Tech was consolidating in that 1605, 1575 range. So almost 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटे रेंज में ट्रेड हो रहा था और आज एक शार्प ब्रेकआउट मिला है हमें HCL Tech में. So HCL Tech is up around 4% and breakout is supported by volumes as well. आज एक sharp rise in volumes भी है HCL Tech में. RSI ऊपर है, MACD slope is also moving upwards. आप देख सकते हो ये ग्रीन हिस्टोग्राम, राइजिंग हिस्टोग्राम बार्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है. So I feel if it sustains above 1610, 1620, looks like it might give a close above that. Then chances are that HCL Tech can move towards 1700, 1720 levels in the short term with around 1610, 1620 acting as a strong support for the stock. Apart from that, some other names that are doing well, one is Indian Metals and Ferroalloys Limited, which is known by IMFA. So IMFA काफी टाइम से ये 1400 के रेंज एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है ये स्टॉक के लिए. आज सुबह के सेशन में ऑलमोस्ट 1393 का हाई टच किया था बट वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई. बट आई थिंक वंस वी गेट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अबाउट 1400, चांसेस आर दैट आईएमएफए में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव नजर आ सकता है. So any breakout above 1400, that is the level to watch out. While on the downside around 1310, 1315, वो एक जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा. Apart from that, one other stock is latent view. So अगर हम latent view की बात करें, so even latent view has been steadily moving up. एक higher high, higher low formation से move होते हुए नजर आ रहा है और ये 20-day EMA को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस इज गोइंग अप. सो ये 20-day EMA जो है वो एक डायनामिक सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे. सो आई फील अगर ये 500 के ऊपर फॉलो थ्रू मूव देता है then I feel latent view can move towards 520, 530 levels in the short term with around 465, 470 acting as a strong support for the stock. The next stock is Lalpat Labs. So Lalpat Labs में again सुबह के सेशन में एक strong traction देखा गया था but there was some profit booking at the higher levels. So 3309 के high से it's gone down to 3234. But having said that, नीचे के लेवल पे अराउंड 3020, 3030 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है स्टॉक का. But I think if Lalpat Labs manages to move above 3275, 3300, then chances are that the stock can move higher towards 3450, 3500 levels in the short term. So keep an eye on Lalpat Labs as well. Apart from that, even Sonacoms is one stock that you can keep in your radar. तो सोनाकॉम्स की हम बात करें, आज काफी पिछले 3 दिन से एक छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे. इट वाज मूविंग इन अ वेरी टाइट रेंज एंड टुडे द स्टॉक हैज गिवन अ नाइस ब्रेकआउट. और पिछले 3 दिन से वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे. आरएसआई अगेन हैज मूव्ड अप. सो एक रेजिस्टेंस है अराउंड 500, 505 के आसपास. बट अगर 505 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है Sonacoms is one stock that can move higher towards 520, 525 with around 475, 480 acting as a strong support for the stock. The next stock is again Motherson. So Motherson from the auto space. So Motherson में भी आज एक strong buying interest नजर आ रहा है. The stock is up around 3%. The rise is followed by volume support as well. RSI is moving up higher. ADX का line भी अगर आप देखोगे that is slightly tilting upwards, which indicates that the bullish trend is kind of getting stronger and MACD has crossed over the signal line.
which is a bullish signal. So any move above 113, 114 is likely to be positive. अगर 114 के ऊपर एक strong breakout मिलता है, then we can move higher towards 120, 122 levels in the short term, with around 105, 106 acting as a strong support for the stock. The next stock that I want to discuss is Mahindra and Mahindra Financials. So अगर हम Mahindra and Mahindra की बात करें, so Mahindra has also hit a new high that is around 333.5 today. So काफी strong trend है. Price has respected its 20-day EMA and it has moved up. अगर आप देखोगे, MACD has just given a crossover, and if it closes about 330, 335 somewhere in that zone, एक strong candle मिलता है, तो even Mahindra and Mahindra Financial Services is likely to move up with around 310, 315 acting as a strong support zone for the stock here. Apart from that, even Bharat Forge is one stock that you can keep in your radar. अगर हम Bharat Forge देखें, तो after a strong breakout on the 11th of November, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट रिलेटिवली यहाँ पे फ्लैट चला गया था भारत फोर्ज. सो ऑलमोस्ट 1410 ऑन द अपसाइड एंड 1370 ऑन द डाउनसाइड. सो ये 40 पॉइंट्स का रेंज में छोटा सा आप देख सकते हो, एक फ्लैग एंड पोल है. और आज फिर से द प्राइस हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड व्हिच इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन. RSI भी ऊपर की तरफ है, ADX is also up, MACD slope is pointing upwards. So if it sustains above 1410, 1415, इसके ऊपर अगर हमें strong closing मिलता है, then chances are that even Bharat Forge can move up higher with around 1370, 1375 acting as a strong support for the stock. And the last stock that I want to discuss is Policy Bazaar, that is from the new age space. So Policy Bazaar, post taking support from its 200-day EMA, it has shown some steady signs of recovery. It has come back to its previous resistance of 1860, 1870. तो अगर हमें 1870 या current level से एक follow through move मिलता है somewhere above 1865, 1870, then chances are that Policy Bazaar can at least move towards 1950 levels in the short term, with around 1770, 1780 acting as a strong support for the stock. So these are the stocks, these are the sectors that you can focus on. And that was all about today's bid market session. I hope it was informative. Now let us start off with our question and answer session. If you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box. If you have any queries, I'll be happy to help you all. Yeah, FII is going defensive with IT, so no signs of reversal in IT yet. I think अभी FII का data आएगा हमें first 15 days का, probably in a couple of days. शायद कल या परसों आना चाहिए. So we'll see whether FIIs have put money in IT or not. So when SDL का data आएगा, we'll discuss that probably in tomorrow's or day after tomorrow's. Whenever the data is out, we'll discuss about that soon. TMPV का bottom कहाँ पर है? I think it's very difficult to say where is the bottom for TMVP, because I think the previous support is around 320. So अभी फिलहाल 360 के आसपास है. I feel trend काफी नीचे है. The price is again trading below all the key moving averages. So I feel no signs of reversal yet. So maybe it can move towards 320 levels in the short term. TMPV 360 put you have taken. Okay, for hedge you are saying. Yeah, Harish, I remember you are having Tata Motors stocks. So let us see. Tata Motors, you are looking at January 26, 360p. Yeah, I think you can consider 360p. Yeah, you can. I think I feel as long as it doesn't, as long as it stays below 380, I think 380 is a strong resistance for TMPV. So as long as it trades below 380, the trend is going to be negative, and I don't see any improvement in TMPV going ahead unless there are any positive triggers, because management ने guidance भी अगर आप देखोगे तो negative ही है. The fundamentals haven't improved either, so probably there will be another. This quarter is also going to be weak for Tata Motors.
So yeah, I think you can look at 360p as an hedge. I think yeah, that's a good option. Oriental Hotel. Okay, let me look at Oriental Hotel. Can you help me with the symbol name? Yeah, Oriental Hotels. Yeah. So Oriental Hotels again. See, the overall tourism space is in a downtrend. Rakesh, it is underperforming Nifty. Again, no signs of any recovery yet. It is below its 20-day EMA. So I feel 117 is a strong support. I think any move below 117 can lead to price moving further down. So better to avoid Oriental for now. Let's wait for some fresh triggers and then maybe we can revisit this stock again. Priyanka ma'am is asking for Canara Bank. Canara Bank is good. Priyanka ma'am, अगर हम Canara Bank देखें, I think PSU space overall is doing well. But I would suggest avoid fresh entry uh, at the current levels here because already काफी ऊपर चला गया है. And if you're holding, then I would say at least book at least 60-70% of your positions. And maybe you can hold 20-30% of your positions with a SL of maybe 144. You can trade your SL and you can probably lock in your gains. For fresh entry, maybe wait for some profit booking, maybe around 140, 143 in case it falls. And then look for a reversal signal in Canara Bank because since it has already run up a lot, it's better to take some profits and trail the remaining quantities with a higher stop loss somewhere around 143, 144. Manoharji is asking for fresh entry in Eternal. Eternal avoid, I would say जब तक 320, 325 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है, it's better to avoid Eternal. थोड़ा सा एक sluggish phase में चला गया. अब Eternal profit booking चल रहा है. I think it can fill, if it goes below 290, it can fill the gap until 278. But wait until 320, 325 in Eternal. No signs of reversal yet. So फिलहाल के लिए इसको अभी hold पे रखना. Which was that other stock? Bellrise. Yeah, Bellrise is good, but again उसमें momentum नहीं है. I think आज एक strong uptick नजर आया. It's almost up around 4%. Wait for a close above 167, 169. I think maybe then you can consider with an SL of let's say 156, 155. But wait for close above 167, 169. Maybe then you can consider Bellrise. Priyanka ma'am is asking for Anant Raj for fresh entry. Anant Raj, see, फिलहाल avoid because एकदम छोटे छोटे candles बन रहे हैं यहाँ पे. So there is clear lack of momentum and strong directional bias in the stock. Maybe इसका एक trend line अगर मैं draw करूँ यहाँ पे, so wait for breakout above maybe 640 के ऊपर maybe we can look for a fresh entry. But जब तक एक strong bullish candle नहीं बनता है, जब तक 640 के ऊपर close नहीं मिलता है, it's better to avoid Anant Raj. Pramod ji is asking for Union Bank. Union Bank is good. See, it's part of the PSU space. I think once it crosses 158, 159, I think it can move towards 170, 172 levels in the short term. With around 147, 148 acting as a strong SL. So Union Bank is good. ITC hotels avoid because overall tourism industry underperform कर रहा है Nifty को. So I would say avoid ITC hotels for now. Also, it trades below all the key moving averages. So I think any move below 205 can lead to price moving down even further. So avoid ITC hotels. Maybe Reliance is good. Reliance is in a good trend. लास्ट 5-6 दिनों से एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है. बट अगर एक 1530 के ऊपर एक फॉलो थ्रू मूव आता है, then chances are that Reliance Industries can move higher until 1550, 1560 levels. Sunish ji, I can't give a view on State Bank since I'm bounded by compliance. Prajna ji is asking for VLSF Finance. Okay. I think काफी टाइम में स्टॉक एक डाउन ट्रेंड पर था एंड वी हैव एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, बट टू अर्ली टू कॉल इट एज अ रिवर्सल
प्रजना जी, आई थिंक मे बी अगर ये 270 के ऊपर फिर से एक फॉलो थ्रू मूव देता है, देन चांसेस आर दैट वीएलएस फाइनेंस कैन मूव अप हायर, बट वेट फॉर अ फॉलो थ्रू मूव. आई थिंक 270 के ऊपर मिलता है तो अराउंड 250 का एसएल रख के आप कर सकते हो, बट फॉर नाउ अवॉइड, because this is just the first tick after a downtrend. So थोड़ा सा maybe correction के बाद if it sustains about 270, then maybe you can consider. Crompton Greaves. Okay, if we look at Crompton Greaves, avoid, clearly downtrend में है. It trades below all the key moving averages. I think up move जब तक 295 300 के ऊपर पार नहीं कर जाता है तब तक ये ट्रेंड डाउन ही होगा. So avoid Crompton Greaves. यूको बैंक again avoid करना because I think it needs a breakout about 34 35. So maybe 34 35 के ऊपर breakout मिलता है तो अब एक uptrend मिल सकता है, but till we don't get that, it's better to avoid. आशीष जी is asking for SJVN avoid करना, ये सारे की moving averages के नीचे, it's at around 82. So no reversal signs, maybe इसको it needs to move again post 85 87 के ऊपर breakout चाहिए. जब तक ये नहीं आता है, it's better to avoid SJVN. If you're already holding, then maybe around 81 का SL रख के आप hold कर सकते हो. अगर आपका 81 hit हो गया तो it's better to get out of the stock. Priyanka ma'am is asking for Arvind Fashion. So Arvind Fashion again, no momentum in this counter. So I think इसका 490 एक strong support होगा, उसका 200 ये में भी वही level पर है. See, if you're already holding तो आप 490 का SL रख के आप चल सकते हो, but on the upside fresh entry, wait for a breakout above 515 520, because अभी कुछ direction ही नहीं है stock में. I think 515 520 के ऊपर breakout मिलता है, maybe then you can consider, but for now it's hold. But if you're already holding, then 490 का SL रख के आप चल सकते हो. प्रजना जी, डिफेंस इंडेक्स इज गुड, वी डिस्कस्ड yesterday. सो डिफेंस इंडेक्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, बट आई फील 8350 8400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, then your defense names can start moving up higher. So keep an eye on defense names. I feel a breakout might be around the corner, but अभी तक कुछ साइंस दिखे नहीं है. But fall भी इतना नहीं हो रहा है, but I feel 8350 is a strong resistance level for defense. I think once we get a breakout, then the price can move up higher. Rakesh ji, grows in lower circuit. Yes, I think it's a routine profit booking considering the fact that it's already run up almost 100% from its listing price. And valuation भी काफी बढ़ चुका है compared to its peers. So I think it's a routine profit booking in Grow. KC, yeah, I think KC, I heard Power Grid has bought them from new contracts. I think KC downtrend में ही है. I feel the next support is under 680 685 is where the next support is. Yeah, it looks like it can, but there is one support at around 720. If it breaks 720, then I think we can expect 700 in KC. Vishwanath ji is asking for PGL. So PGL again, see, overall अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड साइडवेज ही है. नीड्स अ ब्रेकआउट अबाउट 600 605. अगर पीजीएल का ब्रेकआउट आता है 605 के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट सब अप मूव, बिकॉज अगर आपको याद है लोअर गाइडेंस के बाद स्टॉक अभी भी साइडवेज में ही है, कुछ फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है. But I feel wait until 595 600 maybe, when then we can probably take a chance on the upside. But I would say avoid PGL for now. Solar industry, Suman, I think आप शायद वारी एनर्जीज की कल जो आईटी रेट्स हुए थे उसके ऊपर से कंसर्न है. आई फील see, as an industry, solar industry काफी strong है. I think the prospects, long term prospects are really good for the solar industry. I think काफी strong growth prospects है. And I think ये जो IT rates का जो news है on Vari Energies, I don't think that is going to have a big impact on the industry as a whole. But I think there are some really good names in the solar space, that can do well. So I think if you ask me, then I think on a personal basis, solar industry, I think मैं bullish ही हूँ उस पर. NMDC,
NMDC again, like I said, metal sector में थोड़ा सा profit booking अभी नजर आया है काफी. It has run up a lot. Maybe if we get a break above 79, then chances are that the price can move up even higher. So wait for a breakout above 79. आशीष जी NLC का क्या करे? NLC India थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में है. मे बी वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 265 268. I think once we get that, the price can move up higher. If you're already holding, then maybe around 250 का SL रख के आप hold कर सकते हो. Yeah, Grow had 30 lakh shares of short selling. Yeah, because a lot of people thought क्योंकि already बढ़ चुका है अभी इसको sell करते हैं, but the short sellers were not able to give delivery, so hence the shares had to go to the auction. But problem क्या है, जब shares auction में जाता है, so exchange usually levies a penalty of 20 to 25%. So the buyers won't get the shares. It's just that the buyers will get the penalty that is levied on the sellers by the exchange. That money is transferred to the buyers. So काफी लोग ने short sell किया है in anticipation that the price will kind of fall. But आज 10% नीचे है यहाँ पे. But yeah, that's about it. So Manohar ji, IDFC First Bank. Okay, I'll just take one last query before I close. IDFC First Bank, I think wait until we get a breakout above 83. Abhi wo consolidation phase mein overall the trend is intact. But I think once we get a breakout above 83, the price can move up higher. So wait for that. Okay, so that's all from my end, guys. I hope today's session was informative. And do share the link with your friends, families, and relatives so that even they can join these sessions and take advantage of the same. And I'll see you all tomorrow, guys, at 12:30. And tomorrow we'll also have one webinar in the evening at 4 o'clock, wherein I'll be discussing about chart patterns. So we'll be learning different types of chart patterns. So we'll meet at 12:30 and 4 o'clock tomorrow for a couple of sessions. Until then, bye, guys. Take care. Stay safe. And hopefully, let's hope that Nifty sustains about 26,000 today. Bye, guys, and take care. See you.